Good morning, students. As you know that our literature class is going on, and in this our literature class we are doing our poem, and the poem is a lecture upon the shadow. And in this poem we have done three stanzas, and we are doing the conclusion part of this stanza in our video. Here in this video we will do this part of our life. Means here, as I have told you earlier, that a person in his love's life faces two phases. दो phases का वो सामना करता है. So we have done this phase, the first phase of life, in which when lovers comes together, they resolves their problems, they understand each other very well, their differences become vanished, उनकी जो दूरियां हैं वो गायब हो जाती हैं, and their love is on its highest peak. But after this, when they are trying to cheat each other, at that time their loves again makes differences between both of them. So here today we are doing this part of the life. As sun went towards the westward, means as their love vanishes from both of them, as they're trying to cheat each other, so at that time their loves like a westwardly sun. Okay, so I am just revising the few lines which is before these lines, so that you can connect yourself very easily with this poem. Okay, so I am revising it. Accept our loves at this noon stay. Accept our loves at this noon stay. What the poet is saying? Poet is saying that if our love doesn't stay at this noon time, if our loves doesn't stay at this noon time, then what will happen? We shall new shadows make the other way. Okay, if it doesn't stay, means if the sun doesn't stay at that noon time, then he will make a new shadow. I am personifying the sun here. He will make a new shadow. Why? As he will go in the morning, the sun rises from here, then there is shadow here. Okay, so as the sun goes upwardly, the shadows comes closer. Is it okay? Now, as the sun moves towards the west, what will happen? As the sun moves towards here, it will create a shadow in opposite direction, and as it will goes westwardly, जैसे वो और ज़्यादा नीचे की तरफ वेस्ट में जाएगा, क्या करेगा? इट विल क्रिएट अ न्यू शेडो, एक नई शेडो क्रिएट करेगा जो क्या होगी? दूर जाती जाएगी. ये नज़दीक आ रही है, तो ये क्या कर रहा है कि ये शो कर रहा है कि उनके डिफरेंसेस कम हो रहे हैं, पर जैसे ही सूरज जैसे ही नीचे की तरफ जाता है तो उनके जो डिफरेंसेस है वो क्या है? बढ़ने शुरू हो जाएंगे. सूरज जाने से मतलब कि जैसे ही ये सन उनके लव को शो कर रहा है, और जैसे ही उनका जो लव है वो एक दूसरे से अलग होगा, अर्थात उनमें फेथ की कमी आएगी, तो उनके डिफरेंसेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे. तो यही चीज यहां पर कवि जो है वो दिखाना चाह रहा है. सो व्हाट द पोएट इज सेइंग हियर, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, वी शैल न्यू शैडो मेक द अदर वे. कि एज इफ आवर लव डजंट स्टे ऑन इट्स हाईएस्ट पीक, on its highest degree, and it goes down, both are trying to cheat each other, then they will make a new shadow, and this time this shadow will show their differences. तो उसने कहा कि we shall make new shadows, at the first we were made to blind. And the poet is saying here that before it, the shadow which we make first, it was just only to make blind ourselves or others.
कि उसने कहा कि जो शैडो हमने पहले बनाई थी, मतलब जो डिफरेंसेस पहले हमसे दूर हो गए थे, वो डिफरेंसेस केवल एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए थे. These which come behind will work upon ourselves. And after that he said that the shadow which will come behind us, it will work upon ourselves. ये हम पर ही काम करेगी, मतलब ये हमें शो करेगी कि हम कैसे हैं, और ये हमें बेवकूफ़ बनाएगी और हमारे जो प्रेम है उसमें कमी आती जाएगी. It will reduce our प्रेम and slowly we will go far from each other. And blind our eyes. और ये हमारी आंखों को क्या करेगी? अंधा कर देगी. Means it will make ourselves fool. Now what the poet is saying in the conclusion part of the poem, if our loves faint and westwardly decline, what the poet is saying here, as our loves become faint, faint means kami ana. So here the poet is saying that if our loves faint and westwardly decline, as the sun goes westward, then it creates new shadow. Like that, if our love doesn't stay on its highest degree, our love again started to become down, कि हमारा जो लव है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, लाइक ए सन गोज वेस्टवर्ड, कि जिस प्रकार से सन यहाँ पर देखो ऊपर उठता है, यानी कि प्रेम बढ़ रहा है. यहाँ क्या हो रहा है? सन जिस तरह से वेस्ट में जा रहा है तो नीचे की ओर जा रहा है, तो वैसे ही हमारा जो लव है वो भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे से जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगा. हमारा लव भी कम होने लगेगा. आवर लव विल आल्सो डिक्रीज एज द लाइक ए सन गोज वेस्ट, goes down in west. So if our loves faint and westwardly decline, to me thou, to me thou means you, कि to me you falsely means if we will not believe on each other and our loves faint, then for me you are a false person, you are cheating me. Thine and I to thee means for you, कि for me you are a false person, and to thee and to for you mine actions means my actions, mine means my, कि for you my actions shall disguise means for you my actions are also disguised. Disguised means make false. For me, you are false, your actions are false, and for you, my actions are false. What the poet is saying here? The poet is saying here that when we try to hide things from each other, when we are cheating each other, we are making things false for each other, then our loves will decrease as the sun goes down in westward. And after that, whatever we will do, everything will be disguised, means everything will be false for each other. Whatever you will do, I think you are cheating me, you are making me fool, and whatever I will do, you will thought that you are making fool of me. Okay, so here the poet is saying, I am revising it again, कि if our loves faint and westwardly decline, कि अगर हमारा जो प्रेम है वो कम हो जाता है, and westwardly decline, कि जैसे सूरज वेस्ट में नीचे चला जाता है वैसे वैसे हमारा प्रेम जो है जो एक दूसरे से दूर जाता है, तो to me you falsely thine, कि means to me मेरे लिए, you जो तुम्हारे कार्य हैं, falsely यानी कि वो झूठे हैं, वो मेरे लिए वो सब गलत है, and I to thee, और मैं जो भी कुछ करूंगा वो तुम्हारे लिए, mine action यानी कि my action shall disguise, वो भी क्या होंगे? झूठे होंगे, false होंगे. The morning shadows wear away. So as we will make false each other, the morning shadows wear away means the differences, वो दूरियां which we have
वेनिश्ड फ्रॉम ईच अदर, जो हमने एक दूसरे से गायब की है, वो सारी की सारी दूरियां अब एक बार वापस से जो है वो क्या है, जो है वो होना शुरू हो जाएगी. वी विल क्रिएट अगेन डिफरेंसेस बिटवीन अस, बिटवीन आवर लव. सो द पोएट इज सेइंग हियर, द मॉर्निंग शैडोज वियर अवे. जो क्या होगा कि द मॉर्निंग शैडो, यानी कि मॉर्निंग शैडो मतलब द डिफरेंसेस विच वी वेनिस्ड फ्रॉम अस, जो हमने गायब कर दिए थे एक दूसरे के बीच में से, दे विल कम अगेन, वो एक बार वापस आ जाएंगे. वियर अवे, वियर अवे मीन्स गो अवे, वो जो है वो गायब हो जाएंगे. ठीक है. बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे. एंड द इवनिंग शैडो मीन्स द डिफरेंसेस. These means here the poet is talking about differences. Here the poet is saying that the differences grow longer all the day. As the day will pass, day by day our differences become longer and longer. मतलब जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा हमारी दूरियां और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा. कब होगा? कि जब हम एक दूसरे को धोखा देना शुरू करेंगे. But oh, love's day is short if love decay. And the poet is saying that if the love is decaying in our life, अगर हमारे जीवन में प्रेम खत्म हो रहा है तो प्रेम के दिन बहुत छोटे होते हैं, अर्थात वो प्रेम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है. The love ends in our lives very fast, very soon. If we are not loving each other, we are making fool each other. Love is growing or full constant light. The poet is saying philosophically that love is growing. Love is a thing that should be grow, and it is growing day by day. प्रेम एक ऐसी चीज है जो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है. प्रेम घटने वाला नहीं है, प्रेम कम होने वाली चीज नहीं है. प्रेम तो बढ़ना चाहिए, पर हम एक दूसरे को धोखा देंगे तो प्रेम बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेम के दिन छोटे होते हैं. और फुल कांस्टेंट लाइट, और एक प्रेम एक ऐसी चीज है दैट गिव्स लाइट इन आवर लाइफ. इट मेक्स आवर लाइफ ब्राइट. एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज नाइट, बट हिज फर्स्ट मिनट, द फर्स्ट मोमेंट afternoon. Afternoon means कि after when we are making fool each other, कि जब हम एक दूसरे को मूर्ख बनाएंगे, उसके बाद में वो जो पहला क्षण होगा वो क्या होगा? इज नाइट. इज नाइट मीन्स कि वो रात, रात्रि किस चीज को जो है वो शो करती है? नाइट ऑलवेज रेफर्स फॉर सैडनेस, फॉर डूम वी कैन से. सो इज नाइट मीन्स अगर हमने एक दूसरे को धोखा देना शुरू किया तो उसके बाद में हमारे जीवन में बस केवल दुख ही होगा और कुछ भी नहीं होगा. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पोम and this is our conclusion part of this poem. So I think you all have understood it very well. If there is any problem, then call me freely. I'm always available for you. Thank you.